I will discuss about the managerial economics, nature and scope. So let's start the video. तो भिडियो आरंभ करिया पूर्व आपन गोटे कथा कहिबि जे एपर्यंत आपण माने हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नाहंती तो एबे ही सब्सक्राइब करंतु काहे कि ना एमिति नुवा नुवा सब कंटेंट जहा कि आपनकर +2 +3 पीजी लेवल पई तो हमें प्रोवाइड करथाउ केवल कॉमर्स पई तो कॉमर्स रिलेटेड जति कि सब आपनकर एमसीक्यू होइथाउ किंबा आपनकर जे कोन से विषय डाउट थाउ आपण हमको पचारि परिबे हमको व्हाट्सएप नंबर मध्ये आपन को प्रोवाइड कर दिया जीवो आपण हमको व्हाट्सएप रे मेसेज करि परिबे तो चलंतु देरी न करी आज आपण मानको पई सुंदर वीडियोटी आरंभ करिवा जो टॉपिक टी रहिछि हमरो तो हमें ए वीडियो जानिबा नेचर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो आपण मानको एथिरे केवल पॉइंट कहूछि या परे जो आपण मानको मु वीडियो प्रोवाइड करिबि तार पूरा संपूर्ण डिटेल्स जो आपनकर पॉइंट डिस्क्राइब करिकि आपण मानको पई नोट भी प्रोवाइड कर देबी तो आपण मानको रहिछि आर्ट एंड साइंस तो managerial economics is a both art and science. It is a microeconomics. Managerial economics कौन एटा होची microeconomics and also use of macroeconomics. तो हम दुईटी पॉइंट करि परिबा जे तार नेचर कोन रहिछि से गोटे माइक्रोइकोनॉमिक्स आउ मध्य से मैक्रोइकोनॉमिक्स तो दुईटी इकोनॉमिक्स रो से जडित रहिछि तो जो हमर फोर्थ पॉइंट रहिछि मल्टी डिसिप्लिनरी. Fifth point, it is a goal oriented. Yes, managerial economics is also goal oriented and also तो आपण माने चाहिए आउ गोटे पॉइंट लिखि परिबे managerial economics is a profit oriented, is a management oriented. पॉइंट होचे आपनकर helps in understanding the actual behavior of the business. से बिजनेस तार बिहेवियर कोन रहउची आमे ताकू जानि परिबा managerial economics साजरे. It helps in decision making and forward planning. एटा डिसीजन मेकिंग करिवारे हमकु बहुत सहायता करिथाय एवं एटा कोन करथाय ना प्लान टाकू फॉरवर्ड करथाय आगामी प्रोसेस पई. तो 8 नंबर पॉइंट आपण मान कर रहिछि प्रेस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव डिसिप्लिन. इट इज बोथ द प्रेस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन. ओके आपण मान को ऑलरेडी म आगर कहि सारछि इट इज आल्सो मैनेजमेंट ओरिएंटेड. आपण मान किछि डाउट नाही मैनेजमेंट ओरिएंटेड लिख परियो तापर एठी 8 नंबर पॉइंट आपण मान कर रहिछि प्रैग्मेटिक. ओके 11 नंबर पॉइंट आपन को रहिछि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो सेन तो हमें वर्तमान ताको डिटेल्स रे देखिबा जे तार कोन कोन सब क्राइटेरिया रहिछि तो डिस्क्राइब हमें कमती करि पारिबु. तो फर्स्ट पॉइंट हमर जो थिला आर्ट एंड साइंस तो मैनेजमेंट थ्योरी रिक्वायर ए लॉट ऑफ क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल टू मेक डिसीजन और सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके Many economists also find a source of research saying it includes applying different economics concepts, techniques and methods to solve business problem. Next one is microeconomics. Microeconomics in managerial economics, the managers typically deal with the problem relevant to a single entity rather than the therefore consider an integral part of microeconomics. Use of macroeconomics, a corporation work in which it serves the consumer, which is an important part of the economics. Next one, multidisciplinary. Okay, it uses many tools and principles that belongs to different disciplines such as accounting, financing, statistics, mathematics, production, operation, research, human research, marketing, etc. Prescriptive and normative disciplinary by introducing corrective steps it aims at achieve the object and solve the specific issues of problems. So management oriented. What is management oriented? These surveys has an instrument in managers' hands to deal effectively with business related problem and uncertainties. तो ये आपण मानक गोटे पॉइंट मु कहया पई चाहिबी तो ये जो आपण माने देखुचंदी जो आपनकर नेचर जो रहिछि बा कैरेक्टरिस्टिक कहंतु आपनकर
नेचर कहतु बा फीचर्स कहतु ये जो आपण मैंने देखि पार्थे जो सब पॉइंट गुड़ा रही तार जो फीचर सब रही तो ये फीचर्स आपन कौन करें ना आपंकर एमसीक्यू आसीपे नचेत आपंकर एटा कौन हो पारे ना शॉर्ट क्वेश्चन जो रही है मिनिमम वार्ड भितर 2 मार्किया कि 4 मार्किया आपंकर आसीपर तो भल भाव में ए पॉइंट गुड़ा को आपड़ जदि बुझीजे तो आपंकर लंग क्वेश्चन सहित आप गोटे शॉर्ट क्वेश्चन गोटे थर पढ़ी पारे। तो नेक्स्ट जीवा आम आग को तो स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्कोप कौन रही फास्ट रही तार डिमांड थ्योरी कौन करता है ना यहाँ डिमांड करता है बट डिमांड अच्छी कि नहीं गोटे ऑर्गेनाइजेशन ता ये फाइंड आउट करता है शो करता है। तो डिसीजन ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन थ्योरी तो यह गोटे प्रोडक्शन गोटे डिसीजन नहीं पारे। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग स्ट्रक्चर मार्केटिंग तो किभली स्ट्रक्चर रहिबो से ये दर्शाई थाए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग थ्योरी एंड एनालाइसिंग प्राइसिंग थ्योरी कौन रही तार से गोटे एनालाइसिस करिपरिबो जो मार्केट को मार्केट रे को प्राइस बा केमिति कौन गोटे प्रोडक्ट रो हम प्राइस रखी पारिबु जहाँ कि समस्तन पई सुटेबल हो पारिबो तो ताहे थ्योरी रही। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन ऑन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फार्म कैन इन्वेस्ट देयर मनी टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कौन करता है ना गोटे डिसीजन गोटे से तैयारी करता है जो कौटी इन्वेस्ट कले केते प्रॉफिट मिल पारिबो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मध्य गोटे तार स्कोप रही। तो नेक्स्ट पॉइंट आम जीवा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पॉलिटिकल व्हाट इज डिमांड थ्योरी डिमांड थ्योरी emphasize the behavior of the consumer towards a product or service. This take into account the customer expectation, performance and condition to enhance the manufacturing process. Decision on production and production theory. This theory is primarily concerned with the volume of production, process, capital and labor cost involved, etc. It aims to optimize production to meet the customer demand. Next one, marketing structure and pricing analysis. Pricing theory and analysis. It focuses on the assessing a product pricing, taking into account to competition, market dynamic, production cost, optimizing sales volume, etc. On capital and investment theory. Capital is the most important business element. This philosophy taken priority over the proper distribution of the research of the company and invest in productive program or invest to boost optical performance. Okay, next point, economical environment. And a country's economics conditions or GDP, government politics, etc. have a direct effect on the company and its operation. The next point is social environment. The society in which the organization like employment conditions, trade unions, consumers, cooperative, एटसेट्रा करुँची आपण मानक भिडियोटी निश्चय भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ एमती नुआ नुआ वीडियो मु आपण मानक नहीं आसीबी।